What's up, everyone? So right now we're in Manali. So we reached here last night and it was all completely clear, no snow at all. But we slept, and today morning when we woke up, it was all snow. Let me just show what happened. आयुष कैसी है बिरयानी ब्रो? बिरयानी अच्छी है। अरे उसको अरे आग है, खाओगे? 5 मिनट रोक लो, खा लो फटाफट। Once I saw the snow outside, I just couldn't resist going out for a small hike. I went to a mountain behind our cottage and started a hike, and I saw everything covered in snow. The view was just amazing. That's the cottage we were staying at. Look how small it looks. I didn't go up any further because it was morning and there was a risk of wild animals further around the jungle. So I just stayed at this place, enjoyed the view. Look how great this looks. I just had no words. Because the snow was melting now, I started to head back home. Yeah, so finally I was able to come down and without falling. So now I'm heading back to home. And once I came back, me and my friends, we all headed towards the Manali's famous Hadimba Temple. After wasting one day literally doing nothing and staying at our cottage, this is second day and we are out and we're right now at Hadimba Temple. Yeah, a lot of you might have seen this place. So yeah, the entire day yesterday what I did is stayed at home. I did went out to take couple of shots. तो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, कल हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है, हम रूम में ही रहे हैं. आयुष अब अपने हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड यस्टरडे. आयुष ज़रा आएंगे आप प्लीज़ ज़रा बताएं लोगों को कल हमने क्या किया. कल हमने क्या किया है? कल हम पूरे दिन रूम पे पड़े रहे, बिस्तर पे हम शाम में यही पूछ रहे थे कि हमने क्या किया है. पर काफ़ी लोग हमारे साथ ऐसे जिनका टाइम ही नहीं कटा थे वो लूप में चलता रहा था. पर कल कमरे से बाहर कोई नहीं आया. बस सैंडविच खाई है उन्होंने. अगर आपने हाउ आई मेट योर मदर देखा है तो देन यू विल नो
सैंडविच। विद सैंडविच। तो अभी हम यहीं पे हैं और यहीं पे वीडियोस ले रहे हैं टेंपल में। आपको मैं ये देखो बिहाइंड द सीन्स दिखा रहा हूँ। बिहाइंड द सीन्स आ जाओ। क्योंकि vlog तो आएगा नहीं। ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। यहाँ हमारे शिवम भाई फ़ोटो ले रहे हैं। ही इज़ मेकिंग अ टाइम लैप्स। बस मैं उसी के पास जा रहा हूँ फ़िलहाल। क्या चल रहा है? देखिए तो दिखाता हूँ, ये 1 सेकंड की बनी है, बहुत छोटी लगेगी। इसको और टाइम चाहिए बनने के लिए। सो या वी आर हेडिंग टू ओल्ड मनाली नाउ। हम लोग हिडिंबा टेम्पल से अभी निकल गए हैं और एक्चुअली शिवम लॉन्ग एक्सपोजर टाइम लैप्स ले रहा था, बट सिक्योरिटी गार्ड केम एंड उन्होंने बोला कि भाई ट्राइपॉड यूज़ नहीं करना है, और बिना ट्राइपॉड के तो खैर आप कैसे ही कर लोगे। तो अच्छी जगह पे आप ट्राइपॉड यूज़ नहीं कर सकते हो, बुरी जगहों पे आप करोगे ही क्यों यूज़। तो हाँ, अब हम बाहर आ गए हैं टेंपल से, और कल यहाँ पे बर्फ़ पड़ी थी जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, और अब उसी का ये लेफ़्ट ओवर बर्फ़ है जो काफ़ी हार्ड होगी और पूरा फिसलन वाला है। So while we are heading to the old Manali, मैं बता देता हूँ हमने किया गया। टुडे जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे मनाली में, इट वाज लाइक एंटायर डे लॉन्ग जर्नी, एंड हम लोग रात को कुछ 11 बजे के अराउंड पहुँचे थे। तो व्हाट वी डिड इज़ जस्ट स्टेड एट होम, बट आज हम थोड़ा बाहर निकले हैं एंड अभी हम ओल्ड मनाली जा रहे हैं। वो रहा शिवम। After Hadimba Devi Temple, we went to Old Manali and explored few cafes. After that, we sat around this water stream, had some food, and headed back to our cottage. While on the way, we went to this pine forest which is nearby the temple as well as Old Manali. It's in the middle of the way, and just spent some time there listening to music with our friends. And yeah, that was the whole day. So there's more to Manali trip, and that we'll cover in the second video. Stay tuned on this channel. Don't forget to like, share and subscribe. And let me know in the comments about your feedback, suggestions or anything that you liked or disliked about this video. I'll see you in the next one.